because we have plenty of time. We are not in. Hello, Dr. Tripathi. We cannot hear you. So, are you there? I think he got disconnected. So, yeah. Okay. Oh, sorry. Yeah. I don't know why it was disconnected actually. Yeah. Okay. Nice. So no, so actually, I was saying that I don't want one-way communication. So if you guys have any kind of queries or any kind of confusion, you can just ask me. And before that, I just want to ask that any one of you have already have any idea about this term big data, that what is big data and where it is used actually? Because you are from different backgrounds, so I will start accordingly. Any one of you? Yes, sir. Someone has told you. Yeah. So okay, if we basically okay, let me share the screen. So is my screen visible to all of you? Is my screen visible to all of you? Yeah, I think, yeah, I can see. Yeah. Okay. So if we basically talk about the term big data, so we have a number of definitions in the literature. That someone says that big data should have 3 number of V's, or big data should have 4 number of V's, 8 number of V's, 9 number of V's. A number of V's has been introduced in the literature. And this one definition is quite popular, that if the data have the velocity, or the data have variety, and the data have volume, then that particular data is called as big data. So basically, if we talk about the big data, we should not fix on the number of V's. Rather, it depends upon the type of data and the type of algorithm that you want to use for that particular data. So for example, you have only 200 or 300 MB of data. So the question arises that whether this data is big data or not, if you have only 300 MB of data. Anyone? You can just unmute and answer me. It is not necessary that you have to answer using chat. Yes, sir. It depends upon the capacity of your computation. Like if your computation capacity is low, then like memory size is low, CPU processor size, processor power is also low. Then this data may become the big data for me. Yes, definitely. That one is interesting. Might be possible. I have a supercomputer. Then 10 GB or 20 GB of data is not big for me, and I have a simple Pentium 3 computer. Then no doubt that 300 MB of data may be big for me, because my computer is not able to analyze it using the traditional methods. One more thing is that, for example, you have 10 GB of data.
you have 10 GB of tweets, and generally I have taken the example of tweets because generally the social media data is majority of the time is big data, because that is unstructured one kind of. So traditional methods are not able to handle that data easily. So for example, I have 10 GB of tweets, and I have to count just the occurrence of word Virat Kohli in that. So no doubt from that 10 GB of data, the counting of the word Virat Kohli is not that much complex task. And for example, I have 300 or 400 or 600 MB of file, and which have a number of matrices, and we need to perform a number of matrix multiplication. So if we compare both the programs, then I think the first one having the 300 or 400 MB of data with a number of matrix multiplication is much computationally complex as compared to the data which is of 8 to 10 GB, but we have to just count the occurrence of word that is called Virat Kohli. So the second very important thing is that it also depends upon the nature of your problem, that how much computational complex is your problem. Might be possible you have some program which is very computationally complex. It requires a number of for loops. The time complexity of your program is very high. So that means if the time complexity of the program is very high, it is very computationally complex. In that case, it requires much resources. Your standalone system will not be able to perform it. And the second thing is no doubt, it also depends upon your system, that how much capable your system is. So we can, in a generic way, we can say that any data set which cannot be handled by our traditional methods may be called as big data. We need some special kind of programming paradigms, which we require some special kind of frameworks to handle that kind of data. Then we can call that as a big data. For example, you have heard the name of the Hadoop and MapReduce programming paradigm, Pig, Hive, and Spark. There are a number of frameworks for solving big data related problems. Now, coming to the point that actually in recent few years, if we talk about in last 8 to 10 years, this problem of big data has become the prominent, or become, you can say that this has become popular one. It has gained a significant attention of the industries and the researchers from the academia because of some reasons. I think my slide is not moving. Yeah. If we look at the recent stats, that why this big data is very popular in this last one decade, if we see at these figures, there are some interesting figures that that might be possible. It may surprise you. If you look at the PPT, you can see that Google stores an estimated of 10 exabytes of data across lakhs of servers. Similarly, there are a number of companies which are handling, which are storing, which are generating millions of bytes of data per day. So this was not true before a decade ago. The main reason for this is that the model of data generation has been changed. The model of data generation has changed. Why it is so? Because if we talk about few days back, only few persons were generating the data, and the rest of the persons were consuming the data. For example, radio broadcast was there. Data was generated from one side, and everyone was listening it. News channels were generating the data, and everyone is listening to the data, or printed media kind of things. But nowadays, everyone is generating that data,
and everyone is consuming that particular data. And the interesting thing is that the data the interesting thing is that the data which is being generated by the users is not the garbage one. That data is very, very meaningful. For example, if you talk about the tweets of the user, everyone is tweeting on any topic, and those tweets are being analyzed by the government agencies, by the administrative services, by the politicians, by the media, and by the business tycoons. So those tweets are, if you are writing some reviews on the Amazon website or any e-commerce website, those the comments which have been written by the customers are analyzed, investigated to get some meaningful insight of that. I will also discuss some of the important social media kind of problems which are related to the big data and how we can solve for our research purpose. And one important figure is also, you can see that from 2013 to 2020, the size of data has increased 10 times. In 2013, the entire data of the universe was recorded as 4.4 GB, whereas in 2020, it has become 44 of gigabytes. And now we can see that in every couple of years, the data of the universe is just becoming double of the previous one. That generates plenty of opportunity for the researchers, for the industries, and for the academicians. Now the thing is that who is generating this particular big data? Social media like Twitter, YouTube, Flickr, this is also generating the data. Some of the scientific instruments, they are also generating this big data. Sensors, technology and networks, there are a number of sensors with the revolution in IoT, they are also generating the data. And the mobile devices. So there are a number of sources which are generating the data on the daily basis. And what we have seen that the model of generating or consuming this data has been changed. And I have already discussed that the old model was that only few companies were generating this data, and rest of the consumers were consuming the data. But now everyone is generating the data and everyone is consuming this data. We have already talked about the definition of the big data, that we should not stuck on this these three V's, that the data which has volume, velocity, or variety is the big data. Rather, we can say that any data which cannot be handled by the traditional algorithms or methods or system may be referred as a big data for us. It may be subjective in nature. Now coming to the point, this big data has got revolution with the invention of Hadoop. And what is Hadoop? Hadoop is basically an open source framework which is widely used for processing the big data. It basically provides a programming platform for the programmers to handle the big data in a distributed computing manner.
And basically it is designed to distribute large amount of data across a set of machines that are called as clusters. That we will discuss in detail. And now, if we talk about the popularity of the Hadoop, that why this Hadoop model is very, very popular. This is because of the 3 points. It uses commodity hardwares, it is reliable, and it is scalable. And what are these 3 points that I will discuss in detail later on? First of all, let us understand that how this particular Hadoop model works, and then how we can perform programming using MapReduce paradigm on the top of the Hadoop model. So before going in detail, I want to just give you a small example that how basically Hadoop works. For example, if you have to count the population of 5 states, for example, you have to count the population of the Uttar Pradesh, Bihar, Punjab, Rajasthan, and Madhya Pradesh. The one solution is that you have a person who is going to count the population of all these 5 states and tell you the result. And the second thing is that you have to divide this task among n number of persons, where one will be the master one and rest will be the slave one. In that case, one will be the master one, and other are the slaves which are working under him. This is slave 1, this is slave 2, this is slave 3, and this is slave 4. And this master has instructed the slave that you have to count the population of UP, and instructed this one that you have to count the population of Delhi, and you have to count the population of Rajasthan, and you have to count the population of MP. These are the states for which we have to count the population. Now everyone has started the job, and everyone is performing its own job independent of each other and in a parallel fashion. At the time when this person is counting the population of UP, at the same time this person slave 2 is counting the population of Delhi, he is counting the population of Rajasthan, and he is counting the population of MP. And might be possible the master may also ask that you have to count the number of males and the number of females in your state separately. He is counting the number of males and females. He is counting the number of males and females. He is counting the number of males and females, and he is counting the number of males and females. Now he has returned the answer. For example, he has returned the answer 10 and 5. He has returned the answer 20 and 10. He has returned the answer 10, 6, and he has returned the answer 20, 4, where 10 is the number of males and 5 is the number of females. When everyone has done his job and everyone has returned the answer that I have got 10 number of males and 5 number of females, I have got 20 and 10, I have got 10 and 6, I have got 20 and 4. So when this master will get information from all the nodes, they have written the data 1, 2, 3, 4, 5. This is the output from all the slave nodes. Then might be possible then master node may ask some slave node again that will have to perform some of these populations, and he may assign any one computer for this particular job. Or might be possible he may say that one person he will assign that you have to count the number of males, you have to sum
the number of males, and at the same time, he will assign another slave that you have to count the number of females. For example, to slave 2, he has assigned a task that you have to sum the number of males, whereas slave 3, he has assigned the task that you have to perform sum of females. So he has counted that 10 plus 20 plus 10 plus this, and he has counted that 5 plus 10 plus 6 plus so on. And finally, he has got slave 3 has given the output as 40 and slave 4 has given output 30. I'm taking some random numbers. So by this way, we can perform our task easily. And if we go to the first point, that Hadoop uses commodity hardware, it means that these slaves are not any kind of special skilled person. They are the normal one. They are the arbitrary. So that means technically we don't require any kind of supercomputers or any kind of computers which cannot fail. If we have a 10 or 20 computers in our lab, we can just connect all those systems using some wireless or wired media, using LAN or Wi-Fi. We can collect all the computers and we can make a cluster of that without worrying about the fact that might be possible during the job any one of computer may get failed. कोई कंप्यूटर उसमें से फेल भी हो सकता है या खराब भी हो सकता है. So we don't have to take care of that. Hadoop is responsible for that. Hadoop takes full responsibility that if any computer is going to be failed or disconnected of the network, then he will take care of that. You don't have to take care of that. So because of that reason, we can use commodity hardware that may be down during the job. The second one is reliable, that these points are interconnected. Why it is reliable? Because if some computer goes down or get out of the network during the execution of the job, your entire job is not going to be suffered for that. It's okay. Hadoop is going to manage. He's going to continue. So for example, this slave 1 got ill while counting the population. He may assign this task of this slave 1 to some other slave. मास्टर ने कहा कि भाई अगर जो slave 1 की तबीयत खराब हो गई है तो वो क्या करेगा, slave 2 पे काम दे देगा, or he may distribute this task that have to be performed by slave 1 among the all the nodes depending upon the nature of the problem. So your entire job is not going to be suffered. So this is the reason we can rely on it. And the third point is scalable. Scalable means that if, for example, if we have our own startup and we have to process that data of the startup, we have to process the comment. I have opened a YouTube channel and we have to analyze the comments that has been given by the users on that. So might be possible. Now I am able to handle that data from 2 computers, but after 1 month or after 2 months, the amount of the data which has been generated by the users is increasing very exponentially. It is increasing exponentially. Then I may keep on adding the number of computers in our cluster to handle that data. So that means scalability is not an issue in the case of Hadoop paradigm. You may increase a number of computers to handle large amount of data, to handle the increasing speed of the data. So in a nutshell, what I have told you so far, that the main principle of working of Hadoop is master-slave architecture. We have a master computer and rest of the slaves. Master assigns the task to different computers that you have to perform the task parallelly. And the most important thing is that all the slave nodes perform these jobs parallelly. That means there should not be any kind of data dependency
in these slave modes. For example, I have this slave 1, I have this slave, or we have machine 1, we have machine 2, we have machine 3, and we have machine 4. I have total of, this is my master node, and I have a total 4 GB of data. I have divided my data in 4 parts. 1 GB is given to this computer, 1 GB is given to this computer, 1 GB is given to this computer, and 1 GB is given to this computer. Like this. So I'm assuming that I have a 4 GB of tweets. मेरे पास 4 GB की tweet है. And I have to count the occurrence of word Virat Kohli. मुझे विराट कोहली कितनी बार आया? I have to count. For this, what I have done, I have just broken this data into 4 parts, each of 1 GB, and I have divided this data among the 4 machines. And each machine is calculating or computing the occurrence of word Virat Kohli on his particular machine. ये भी इस टाइम विराट कोहली कैलकुलेट कर रहा है कि मेरे पास जो डेटा है उसमें विराट कोहली कितनी बार है. At the same time, he is also calculating that मेरे पास जो डेटा है उसमें विराट कोहली कितनी बार है. ये भी कैलकुलेट कर रहा है मेरे पास जो डेटा उसमें विराट कोहली कितनी बार है. And at the same time, it is also calculating that how many times the word Virat Kohli is occurring in the data that we have. In this case, we can see that there is no data dependency. Everyone can do or perform his job independently. But for example, this computer has to perform the task like C is equal to A plus B, and this computer has to perform the job D is equal to C plus A. In this case, we have a data dependency. यहाँ पे हमारे पास क्या है? Data dependency. Why it is so? Because the task of slave 1 has to be completed before the task of slave 2. Because slave 1 is updating the value of C, which is being used by slave 2. Slave 2 is reading the value of C, whereas slave 1 is, or machine 1 is writing the value of C. So in that case, we cannot perform this task parallel. First of all, if you have any kind of problem, then you have to design a program for that. And before designing the program, before writing the logic, you have to be clear that there should not be any kind of data dependency in the jobs of all the computers. Because each computer is running independently, they are not passing any kind of input or output to each other. So we cannot afford the data dependency in the jobs of the systems. No, this actually, I was just giving an overview of this overview of the functionality of the Hadoop. Now you can see the main logic of it. I'm just trying to just remove the circle. Just hold a minute. I will share my screen again. I don't know actually. You want to link your presentations to start.
Okay, now. This is the detailed architecture of the Hadoop that I was talking about. This is the client. Client means programmer that who is going to submit the job. This is the master node, and these are the slave nodes. So we have a cluster of 5 computers. हमारे पास क्या है 5 कंप्यूटर क्लस्टर है where this one is the master node and these are the slave nodes. So this diagram will let you know the entire architecture of the Hadoop and how actually Hadoop works. So basically the entire functionality of the Hadoop is maintained by 5 functionalities. 5 you can say that 5 services. These are called daemons, which keep on running from behind the scenes. So one is the name node, second is the job tracker, third is the task tracker, fourth is the data node, and fifth is the secondary name node. So these are the 5 services which are responsible to handle the entire functionality of the Hadoop services. For example, I have a data of 4 GB. मेरे पास 4 GB का data है. And I'm taking the same example that I have to count the occurrence of word Virat and Rohit, Virat Kohli and Rohit Sharma. I have a tweets of 4 GB data, and we have to count the occurrence of word Virat Kohli and Rohit Sharma. First of all, what happens if you submit data? You have to submit. Client will always interact with the master node. Client means programmer. Programmer is going to interact with the master node. So first of all, client is going to submit this data to the master node, that is a 4 GB. What will happen? This master node is going to divide this data into the blocks of 64 MB by default. And I think in new versions of the Hadoop, this block size has been increased from 64 MB to 128 MB. So we have one default block size that's called, let's call it 64 MB. मेरे पास 64 MB की default block size है. Then what will happen? This entire data will be divided into the blocks. Those are also called as input splits. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? Input split. So we have divided this data that is called 4 GB divided by 64. And for example, let's say I'm not giving the exact number. I have 100 number of input splits. Those are called blocks or input splits. So the entire data is divided into the blocks. And now what will happen? This master node is going to distribute these data blocks into the various slave nodes. इसने क्या किया? 25 blocks यहाँ पे दे दी, 25 blocks यहाँ पे दे दी, 25 blocks यहाँ पे दे दी, और 25 blocks यहाँ पे. Let's say. And whenever you will install this Hadoop architecture on your system, then it forms a file system that is called as Hadoop distributed file system. ये एक file system बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं Hadoop distributed file system. Now what will happen? All these data blocks
are visible to the HDFS, that is called as Hadoop distributed file system. Each slave node having 25 data blocks. Now what will happen? The first service will come to the picture, that is called as name node. What name node will do? Name node actually maintains the metadata. This maintains the metadata. And what is metadata? I think you are already aware of it. This is called as data about the data, information about the data. And what is metadata? Metadata is that, for example, if you have n number of computers and we have m number of data blocks, then which data block is assigned to which computer is the metadata that name node has to maintain, जिसको name node को maintain करना है. तो for example, name node ने क्या किया यहाँ पे? What name node has done? इसने एक metadata maintain किया like this. कि system 1 has block number A, B, C, D. I'm assuming any name of the block. कुछ भी मैंने मान लिया, block का नाम A, B, C, D, whatever it is. And it has assumed that computer number 2 has block number E, F, G and H. किस कंप्यूटर के पास कौन सी डेटा ब्लॉक्स हैं, इसकी सारी इंफॉर्मेशन कौन मेंटेन करेगा? नेम नोड. दैट नेम नोड हैज टू मेंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द डेटा ब्लॉक्स, कि किस कंप्यूटर के पास कौन सी डेटा ब्लॉक. And now we are coming to the second service, that is called as job tracker. So basically this master node have the three services. One is the name node, second is the job tracker, and third is the secondary node. And this slave node have two services. One is the task tracker and another is the data node. तो टोटल हमारे पास कितनी सर्विसेज है? वी हैव 5 सर्विसेज, जिसमें से 3 सर्विसेज किस पे चल रही हैं? नेम नोड पे, मास्टर नोड पे, दैट इज नेम नोड, जॉब ट्रैकर एंड सेकेंडरी नेम नोड. और रेस्ट ऑफ दी जो 2 सर्विसेज हैं वो किस पे चल रही है? हमारी स्लेव नोड पे, दैट इज टास्क ट्रैकर एंड डेटा. स्लेव नोड पे चल रही है. नेम नोड का काम मैंने बता दिया क्या है. इट हैज टू मेंटेन द मेटा डेटा. सबसे पहले मैं क्या करूंगा? आई हैव टू डिवाइड द डेटा इनटू द इनपुट स्प्लिट्स एंड द डिफॉल्ट साइज ऑफ इनपुट स्प्लिट इज 64 MB. 64 MB की डेटा ब्लॉक्स में मैंने डिवाइड किया एंड आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दोस डेटा ब्लॉक्स अमंग n number of computers almost equally. And the metadata of those input splits has been maintained by the name node कि कौन सी डेटा ब्लॉक किस कंप्यूटर के पास रिसाइड कर रही है. Now coming to the second point, that is called as job tracker. What is the responsibility of the job tracker? For example, I have 4 GB of tweets. मेरे पास 4 GB का ट्विटर का डेटा था, ट्वीट्स का डेटा था, and I have to count the occurrence of word Virat Kohli and Rohit Sharma in those tweets. So what I will do, I am going to write a program for that. मैं प्रोग्राम लिखूंगा और प्रोग्राम कैसा रहेगा? We will have a simple program that we have to read the lines of the data. I am going to read the data line by line, and I am going to tokenize those lines with the words. लाइन को मैं वर्ड्स में ब्रेक कर लूंगा और ब्रेक करने के बाद what I will do, whenever I will encounter with the word Virat Kohli, I will say yes, I have got one word that is called Virat Kohli, Virat comma 1, and whenever I will encounter with the word Rohit Sharma, I will say that I have got Rohit Sharma plus plus, and for rest of the words I will ignore it. So what will happen? This client is going to write a program. ये client क्या करेगा? This is going to write a program of counting the occurrence of word Virat and Rohit, and this client is going to submit this job to the master node. Now job tracker will receive the job. Job tracker क्या करेगा?
जॉब को रिसीव करेगा। And job tracker will communicate with the name node that just tell me the information about information of the data for which client has inquired. तो client यहाँ पे दो चीज बेसिकली देता है, एक तो डेटा का पाथ that I have to run XYZ program on ABC data. मुझे इस पर्टिकुलर डेटा पे ये वाला प्रोग्राम चलाना है। Master node or job tracker is going to receive this job that is called XYZ. XYZ job को क्या करेगा? Receive करेगा, and it is going to inquire the name node कि मुझे आप बताएं कि ABC जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर्ड है। Just tell me about the metadata कि जो ABC डेटा है, और ABC डेटा कितना है? 4 GB का है। डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ है? n नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पे। Might be possible यहाँ पे 1 2 3 4 all the 4 computers are containing the blocks of this ABC data. ABC data को हमने क्या किया? ब्लॉक्स में ब्रेक कर दिया। कितने की? 64 MB की। और वो 64 MB की ब्लॉक्स कहाँ है? सारे कंप्यूटर्स के पास है। So this job tracker is going to inquire the name node that just tell me about the data, that where those data blocks are basically residing. Now he will came to know about the information. भाई ये जो ABC डेटा था वो उसकी 4 ब्लॉक कंप्यूटर 1 के पास है, 6 ब्लॉक कंप्यूटर 2 के पास है, कुछ ब्लॉक्स कंप्यूटर 3 के पास है, कुछ 4 के पास है, कुछ 5 के पास है, कुछ 6 के पास है। Got it? इसको पता चल जाएगा। Now what it will do? ये क्या करेगा? इसको पता चल गया कि ये जो डेटा है कंप्यूटर नंबर 1 के पास था, कंप्यूटर नंबर 2 के पास है, कंप्यूटर नंबर 3 के पास है, कंप्यूटर नंबर 4 के पास है। This job tracker is going to contact the task tracker of respective slave nodes. ये क्या करेगा? Respective slave node के task tracker को contact करेगा। And it is going to assign this task to the task trackers. ये job tracker क्या करेगा? ये सारे task trackers को ये काम दे देगा। Which work? That you have to count the occurrence of word Kohli and Rohit Sharma on the data that you have. आपके पास जो डेटा है उसमें कोहली और रोहित वर्ड की काउंटिंग करिए आप। Similarly, this job tracker is going to contact the task tracker of computer 2 that you have to count the occurrence of word Kohli and Rohit. आपको कोहली और रोहित नाम के जो वर्ड्स हैं इनकी काउंटिंग करनी है। इसको भी ये कहेगा, इसको भी ये कहेगा। Got it? Job tracker is going to assign the same job to all the task trackers. It is going to instruct the task tracker that, hey, task tracker, you have to perform this particular program or this particular job on the data that you have. आपके पास जो डेटा है उस पे ये टास्क परफॉर्म करिए। Now what task tracker will do? Task tracker क्या करेगा? It will contact to its data node. भाई आप बताओ ABC के आपके पास कौन सी ब्लॉक्स हैं? ये कहेगा ओके आई हैव ब्लॉक नंबर A, B, ये कहेगा आई हैव ब्लॉक नंबर C, D, ये कहेगा आई हैव ब्लॉक नंबर E, F, ये कहेगा G, H. I'm just assuming that this particular slave node have 2 blocks A, B, this have 2 blocks C, D, this have E, F, and this have G, H. Got it? Now task tracker will take the responsibility or take the order which has been given by the job tracker. And it is going to contact the data node.
भाई आप बताओ आपके पास कौन सा डेटा है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन लेगा कि ए वाला डेटा की मेमोरी लोकेशन क्या है, उसका बेस एड्रेस क्या, व्हाटएवर फाइल का साइज क्या है. एंड नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टास्क ट्रैकर to obey the order of the job tracker and perform the task on the data that it has. इसके पास जो भी डेटा है इस पर्टिकुलर स्टेट नोड के पास, उस पे पर्टिकुलर प्रोग्राम को उसको रन करवाना. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टास्क ट्रैकर. नाउ व्हाट इट विल डू, ये क्या करेगा ब्लॉक नंबर ए बी पे. सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट इसके पास ए बी 2 ब्लॉक है, इसके पास सी डी 2 ब्लॉक है, इसके पास 2 ब्लॉक है, इसके पास ये 2 ब्लॉक ऑफ द डेटा सेट एबीसी. नाउ दिस what this task tracker will do, it is going to perform the task. ये जॉब को रन करेगा किस पे, ब्लॉक ए पे, ब्लॉक बी पे. ये क्या करेगा, ब्लॉक सी पे रन करेगा, ब्लॉक डी पे रन करेगा. फॉर एग्जांपल इट हैज n नंबर ऑफ इनपुट स्क्रिप्ट्स, इसके पास n नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक्स है, जो कि मैंने यहाँ पे 2 जूम की है. उन सब पे उस जॉब को रन करवाएगा, उन सब पे उस जॉब को रन करवाएगा. ये क्या करेगा, ये रन करवाएगा, ये क्या करेगा, ये भी रन करवाएगा, ये भी रन करवाएगा और ये भी रन करवाएगा. बट नाउ कमिंग टू द पॉइंट. अच्छा, डेटा नोड क्या करेगा, एक सर्विस बची डेटा नोड इज गोइंग टू मेंटेन द डेटा, मेंटेन द मेटा डेटा ऑफ द इनपुट स्प्लिट दैट इट हैव. इसके पास जो भी इनपुट स्प्लिट है उसका मेटा डेटा मेंटेन करेगा. फॉर एग्जांपल इसके पास 2 ही इनपुट स्प्लिट है ए कॉमा बी, तो इनके बारे में डेटा नोड इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा कि जो ए बी फाइल्स हैं इनका साइज क्या है, इनका एड्रेस कहाँ पे है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फाइल फॉर्मेट क्या, व्हाटएवर. इट इज प्रोग्रामर डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दैट. प्रोग्रामर डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. All the responsibilities has to be beared by the Hadoop architecture. This is the reason it is so popular. What programmer has to do, it has to submit the job to the master node, and in the job is nothing but it's a program. I'm referring word job for the program. He has to build the logic of the program. He has to write the program. That's it. And rest of the things has to be maintained by the Hadoop itself. And now the program has to be written in a programming model that is called as map reduce. That is called as map reduce. So basically, map reduce is a programming paradigm which programmer has to follow while writing the job, whereas Hadoop provides a framework for running that particular jobs or programs which have been written on the map reduce paradigm. तो प्रोग्राम हमारा किस फेज, 2 फेजेस में लिखा होगा. वन इज द मैप एंड वन इज द रिड्यूस. अब मैप और रिड्यूस कैसे काम करते हैं, दैट आई विल लेट यू नो इन डिटेल, but briefly I am telling at this point that the task which has to be distributed is written inside the map function in the map part, and when we want to segregate something, that we have to write inside the reduce. So for example, in this case, इस केस में मैप के अंदर क्या होगा, रिड्यूस के अंदर क्या होगा. मैप के अंदर व्हाट विल डू हम क्या करेंगे, विराट और रोहित की रेफरेंस को बाउंड करेंगे, और रिड्यूस के अंदर क्या करेंगे, उनका सबका सम अप कर देंगे. वी हैव टू सेग्रीगेट द आउटपुट फ्रॉम ऑल द सिस्टम नोड्स. हर एक कंप्यूटर जो भी हमारा आउटपुट जनरेट करेगा, फॉर एग्जांपल इसने कहा विराट 5 टाइम्स आया, इसने कहा 10 टाइम्स आया, इसने कहा 20 टाइम्स आया, इसने कहा 30 टाइम्स आया. तो मैपर के अंदर क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली मैं काउंट कर रहा हूँ कि विराट कोहली कितनी बार आया, और रिड्यूसर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट फाइंडिंग द सम. मैं उसका क्या कर रहा हूँ, सम फाइंड आउट.
We have to segregate the task inside the Redux. Now I'm again summarizing all the functionalities of all the services. सबसे पहले मेरी functionality क्या थी? Name node. Name node का काम क्या है? What is the task of the name node? When the client will submit the data to the master node, that data will be divided into the blocks of 64 MB, and those blocks has to be distributed among all the slave nodes. Distribute हो जाएंगी. नेम नोड क्या करेगा? इट विल मेंटेन द मेटा डेटा कि कौन सी ब्लॉक किसके पास है, एक टेबल मेंटेन करके रखेगा. इट विल मेंटेन द ऑल द इंफॉर्मेशन कि कंप्यूटर 1 के पास कौन सी डेटा ब्लॉक है, 2 के पास कौन सी, 3 के पास कौन सी, 4 के पास कौन सी. जॉब ट्रैकर क्या करेगा? इट इज गोइंग टू रिसीव द जॉब फ्रॉम द मास्टर क्लाइंट से जॉब को या प्रोग्राम को रिसीव करेगा और ये उस जॉब को हर एक स्लेव नोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. It is going to assign the jobs to all the nodes using the task tracker. So this job tracker is going to contact the task trackers of all the slave nodes, and it is going to assign the task to the task tracker कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको रन कराना है, जो भी आपके पास डेटा है उस पे. You have to run this particular job or program on the data that you have. Similarly, इसको भी कॉन्टैक्ट करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा. So basically, job tracker in a nutshell, we can say that job tracker is responsible for the overall execution of the program. Got it? डेटा नोड का काम क्या है? नेम नोड ओवरऑल पूरे सिस्टम का डेटा मेंटेन करता था, उसका मेटा डेटा मेंटेन करता था. लेकिन यहाँ पे डेटा नोड का काम क्या है? इट इज गोइंग टू मेंटेन द डेटा दैट इट हैव. इसके पास जो भी डेटा है उसको मेंटेन करेगा. फॉर एग्जांपल, इट हैव 5 इनपुट स्प्लिट्स, देन इट इज गोइंग टू मेंटेन द मेटा डेटा ऑफ 5 इनपुट स्प्लिट्स. सिमिलरली इसके पास जो डेटा उसका डेटा मेंटेन करेगा, लॉग मेंटेन करेगा, इसके पास जो उसका लॉग मेंटेन करेगा. गॉट इट? मैप रिड्यूस क्या है? योर प्रोग्राम हैज टू बी रिटन इन द मैप एंड रिड्यूस फेज. जैसे मैंने कहा, यहाँ पे विराट कोहली को काउंट करना मैप फेज में लिखा जाएगा. द बल्क टास्क हैज टू बी रिटन इनसाइड द मैप बिकॉज़ वी हैव टू परफॉर्म द पैरेलल. जब पूरा मैप चल जाता है उसके बाद फिर रिड्यूस चलता है. So my program is divided into 2 phases. One is the map and one is the reduce. First of all, this is the responsibility of the task tracker to execute the task which has been given by the job tracker. ये क्या करेगा? इनपुट स्प्लिट ए को उठाएगा, उस पे मैप चलाएगा. बी को उठाएगा, उस पे मैप चलाएगा. सी को उठाएगा, उस पे मैप चलाएगा. सिमिलरली ये क्या करेगा? इसके बाद जो भी इनपुट स्प्लिट्स है, on each input split we have to execute one map. Map function के अंदर map is a function basically. Whatever the programmer has written inside the map function, वो execute करा देगा. And after that, everyone is going to produce the output, और वो output कहाँ produce होगा? HDFS पे. That is called as Hadoop Distributed File System. While installing the cluster, एक फाइल सिस्टम बनता है, दैट इज कॉल्ड Hadoop Distributed File System. वो आपके लाइन पे होता है, नेटवर्क पे होता है, लोकल एरिया नेटवर्क पे होता है. एंड एवरी कंप्यूटर कैन रीड द डेटा फ्रॉम द HDFS एंड एवरी कंप्यूटर कैन राइट द डेटा ऑन द HDFS. हर कोई उस पे रीड कर सकता है और हर कोई क्या कर सकता है? डेटा उस पे राइट कर सकता है. गॉट इट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. ये क्या है? व्हाट आर दीज आर इनपुट स्प्लिट्स. ये डायग्राम में क्या देखिए? इनपुट स्प्लिट्स. यहाँ पे हमने कोई 5-6 इनपुट स्प्लिट अज्यूम की थी. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6. ये क्या डेटा है? इसके पास ये है, इसके पास है, इसके पास, इसके पास. नाउ यू कैन ऑब्जर्व वन थिंग. आप एक चीज देख रहे हो, इनपुट स्प्लिट 1 इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट द डेटा इज डिवाइडेड among n number of computers equally. So what is the reason that why this input split is occurring at 3 places? This is called as replication. Replication means the block number 1 है, we will maintain 3 by default. We can increase or decrease this number, but by default we are going to maintain 3 copy. We are going to maintain
3 copy or 3 replica of each input split. हर एक रेप्लिका की मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट स्प्लिट बना रहा हूँ, हर एक इनपुट स्प्लिट की 3 रेप्लिका बना रहा हूँ. फॉर एग्जांपल 1 जो है हमारी इनपुट स्प्लिट, वो 3 कंप्यूटर में मैं कॉपी करूंगा. एंड आई कैन इंक्रीज दिस नंबर, आई कैन डिक्रीज दिस नंबर. कंप्यूटर में कॉपी करूंगा. The reason is in the previous slide I have told you that Hadoop is a robust system. Hadoop हमारा सिस्टम कैसा है? It is a robust system. It is reliable one. Reliable one means, for example, I have 4 GB of data and I have executed my program for 1 hour, and after some time ये जो slave node है ये नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया या फिर खराब हो गया, डैमेज हो गया. Because these are commodity hardware, these are not the special hardware. We don't have any reliability for all the slave nodes because we are using commodity hardware. So might be possible any computer may go down. Meanwhile, so in case, for example, this computer 1 goes down, then your entire program will be stopped. So what Hadoop does, ये क्या करता रहता है, it keeps on sensing all the slave nodes कि कौन सा कंप्यूटर हमारा अभी वर्किंग पोजीशन में है और कौन सा कंप्यूटर हमारा वर्किंग पोजीशन में नहीं है. It keeps on sensing. For that, what it will do, ये क्या करता है, इको मैसेज को भेजता रहता है on each 3 seconds by default. हर 3 सेकंड पे एक इको मैसेज भेजेगा कंप्यूटर 1 को, 2 को, 3 को, सबको. And all the slave nodes gives a back signal to the master node that yeah, I am witnessing that I am alive. विटनेस करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी alive, मैं जिंदा हूं. And for example, if this master node is not getting any response from this particular slave node, उसने क्या किया, 2, 4, 5 सेकंड तक या 9 सेकंड तक देखा, no response of echo message is coming from the slave node, then he will assume that ये जो कंप्यूटर है वो या तो डिस्कनेक्ट हो गया या तो खराब हो गया. Now what will happen? इसके पास हमने कहा कि ब्लॉक नंबर 1 और 3 सिर्फ इसके पास ही थी, बट ये कंप्यूटर तो खराब हो गया, बट मेरा तो ओवरऑल आउटपुट गया. Because I cannot tell the output to the client. जब तक सारे डेटा पे प्रोग्राम नहीं चल जाएगा, I cannot tell the number कि विराट कोहली कितनी बार आया है या रोहित शर्मा कितनी बार आया है. I cannot get the exact output. So this is the reason we keep on maintaining the replica. हम लोग क्या करते हैं, replica maintain करते हैं. So in case, for example, computer 1 खराब हुआ, then what it will do, ये क्या करेगा, it will contact immediately this job tracker is going to contact the name node कि भाई just tell me कि कंप्यूटर नंबर 1 के पास कौन कौन सी डेटा ब्लॉक्स थी. Name node is going to respond to the job tracker, इसके पास ब्लॉक नंबर ABCD थी. Immediately what it will do, ये जॉब ट्रैकर देखेगा कि ABCD ब्लॉक की कॉपी किस किस कंप्यूटर के पास. तो फॉर एग्जांपल इसको लगा A की कॉपी इसके पास है, B की कॉपी इसके पास है, C की कॉपी इसके पास. तो इमीडिएटली क्या करेगा, दिस जॉब ट्रैकर विल assign additional responsibility to task tracker of this particular slave node कि भाई अब आपको क्या करना है, ब्लॉक नंबर A, B और C पे भी अपने प्रोग्राम को चलाना है. You have to run the map function on these blocks also. तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था that we have to count the population of 5 states, और एक एम्प्लॉय बीच में इल हो गया, बीमार हो गया, तो हमने क्या किया, किसी दूसरे एम्प्लॉयज को या 2 या 3 एम्प्लॉयज को उसकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी दैट हैव टू परफॉर्म द टास्क ऑफ दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय. सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जॉब ट्रैकर क्या करेगा, नेम नोड से कांटेक्ट करेगा कि इसके पास कौन कौन सी डेटा ब्लॉक्स थी, और इमीडिएटली वो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट द डिफरेंट टास्क ट्रैकर्स. वो क्या करेगा, डिफरेंट टास्क ट्रैकर्स को, दूसरे कंप्यूटर्स के टास्क ट्रैकर को कांटेक्ट करेगा कि आपको इन डेटा ब्लॉक्स पे और भी प्रोग्राम चलाना है.
we will be out of this danger. मैं इस danger से बाहर आ जाऊँ. In case if any slave node gets down or get out of the network, then Hadoop has capability to handle it by maintaining the replica. This is the reason we are maintaining the replica. The default size of the replica is 3. Default size 3 होता है. But in case if you are thinking that your commodity hardwares are very reliable, तो आप replica size को reduce भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो. And if you think that किस बात के चांस ज्यादा है, कंप्यूटर 1 खराब हुआ, फिर 2 भी खराब हो गया, 3 भी खराब हो गया, तो आपको अपनी replica का साइज बढ़ाना भी पड़ सकता है. Like that. So this was the point when the slave node was getting damaged, but unfortunately, if the master node gets damaged, अगर मेरा master node ही खराब हो जाएगा तब क्या होगा? फिर सारा सिस्टम ही गया. So this is the basically bottleneck. ये हमारी क्या है? bottleneck है. अगर जो आपका slave node कोई खराब होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा. Master node is going to handle that particular complication. But in case अगर जो आपका मास्टर नोड ही चला गया, वही खराब हो गया, तो उस केस में व्हाट विल हैपन, आपका क्या होगा? मास्टर नोड ही अगर जो खराब हो गया, तो दैट इज द बॉटलनेक, आपका प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं हो पाएगा. बट फॉर दैट वी हैव वन सिक्योरिटी मेजर. फॉर एग्जांपल, मेरे पास, मैंने कहा 4 GB का डेटा था, और 4 GB के डेटा में मेरे पास 100 इनपुट स्प्लिट थी. 100 में से 90 इनपुट स्प्लिट चल गई थी, उनका आउटपुट मेरे पास आ गया था, लेकिन 10 इनपुट स्प्लिट का आउटपुट अभी भी आना बाकी था. और एट दैट टाइम मास्टर नोड आपका डैमेज हो गया. मास्टर नोड डैमेज मतलब कि नेम नोड गया तो आपका मेटा डेटा भी सारा गया, कि कौन सी डेटा ब्लॉक किसके पास थी, कितने इनपुट स्प्लिट पे काम हो चुका था, कितने इनपुट स्प्लिट पे काम नहीं हुआ था. तो मेटा डेटा कौन मेंटेन कर रहा था? नेम नोड. लेकिन जब मास्टर नोड गया मतलब नेम नोड गया, और नेम नोड गया मतलब सारा डेटा भी चला गया. यू डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पे कौन सी इनपुट स्प्लिट थी, कितने पे डेटा प्रोग्राम चल गया था, कितनों पे प्रोग्राम नहीं चला था. यू डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन नाउ. तो फॉर दैट पर्पस वी हैव अनदर सर्विस दैट इज कॉल्ड फिफ्थ सर्विस. मेरे पास 5वीं सर्विस है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी नेम नोड. इस सर्विस को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी नेम नोड. तो सेकेंडरी नेम नोड का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द सेकेंडरी नेम नोड? सेकेंडरी नेम नोड क्या करता है? व्हाट इट विल डू, इट विल बेसिकली keeps on maintaining the backup. It will keeps on maintaining the backup. ये क्या करेगा? नेम नोड का बैकअप मेंटेन करता रहेगा टाइम टाइम. तो फॉर एग्जांपल, अगर जो नेम नोड ही कल को डैमेज हो गया या मास्टर नोड ही डैमेज हो गया, तो we can resume my program from the point from where it has got failed. जहां पे मेरा प्रोग्राम फेल हुआ था, उसी पॉइंट से मैं अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम को रिज्यूम कर सकता हूं. I can resume that particular program. कैसे रिज्यूम कर सकता हूं? By getting a backup from secondary name. वापस से मेरा जब मास्टर नोड सही होगा जब भी, तो मैं सेकेंडरी नेम नोड से इमीडिएटली बैकअप जनरेट करूंगा, लूंगा, एंड आई कैन रिज्यूम दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है ना? Now I think I am continuously speaking from last 1 hour and 15 minutes. Now I want to take some queries from the audience, that so far if you have any queries in your mind, you are most welcome. अगर if you have any doubt, अभी तक आपको समझ में आया या फिर नहीं आया? I just want answer from the audience. You can just unmute and tell me. You don't have the right to unmute. Okay, got all the points.
Okay, the noise we can continue. Yeah, 1 second. Once again, please explain map produce. Okay, actually, I haven't explained map produce yet. I was just telling about the overall architecture of the Hadoop, and now onwards in the next slide, I will get in the details of the map reduce. अभी map reduce के डिटेल में मुझे जाना बाकी है, तो अगली स्लाइड्स में हम लोग map reduce के और भी डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है? So in the next slide, you will get the information in deep about the map reduce. I was just explaining about the architecture of the Hadoop. Hadoop का architecture क्या है, हार्डवेयर कैसा है और कैसे काम करता है. I understand that say a blank bank data is maintained not at one master but at 2 or 3 nodes. Someone is asking that I understand that say bank data is maintained not at one master but at 2 or 3 nodes, and failure of any one resumes the task from that. Yeah, actually what happens, that data is distributed among the different machines. For example, I have a cluster of 5 machines. Then I am going to break that data into the input splits of 64 MB, और उन input splits को I am going to distribute among the different computers. बेसिकली जो फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 कंप्यूटर थे, आई विल जस्ट टेल यू अगेन. सो for example, I will just clear you with this example, with this slide. So for example, I have this entire data. This data is broken into the input splits, and the default size of input split is 64 MB. हर एक इनपुट स्प्लिट का डिफॉल्ट साइज क्या होता है, 64 MB. ये जो 64 MB की डेटा ब्लॉक्स हैं, ये आपके डिफरेंट स्लेव नोड्स पे डिवाइड कर दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है. These are distributed to the n number of slave nodes. Now I have to perform the task parallelly. So master job tracker is going to send the job to all the slave nodes. जहां पे होता, फॉर एग्जाम्पल इसके पास 2 ब्लॉक, इसके पास 2 थी, इसके पास 2 थी, इसके पास. तो on each computer we have some portion of the data. किसी के पास पूरा डेटा नहीं है, हर कंप्यूटर के पास क्या है, इट हैज सम पोर्शन ऑफ द डेटा. और प्रोग्राम सबके पास क्या है, सेम है. तो ईच कंप्यूटर हैव सेम प्रोग्राम. सबके पास क्या एक ही प्रोग्राम है कि आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा वर्ड की काउंटिंग करनी है. गॉट इट. बट हर एक कंप्यूटर के पास डिफरेंट क्या है, द डिफरेंट इज डेटा. इसके पास अलग डेटा है. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ब्रॉड व्यू में कि वी हैव टू काउंट द पॉपुलेशन ऑफ 5 स्टेट्स. तो हर एक एम्प्लॉय के पास काम क्या है, सेम है. सेम काम क्या है, उसको काउंट करना है पॉपुलेशन. लेकिन डिफरेंट क्या है, एरिया. सबका एरिया डिफरेंट है, सबका डेटा डिफरेंट है. तो ईच कंप्यूटर और ईच स्लेव नोड हैव डिफरेंट डेटा बट दे हैव द सेम प्रोग्राम. अलग अलग डेटा पे सेम प्रोग्राम को रन करना है. तो मेरे पास 4 GB का डेटा था, मैंने 1 GB इसको दे दिया कि 1 GB पे आप काम करो, 1 GB पे आप काम करो, 1 GB पे आप काम करो और 1 GB पे आप काम करो. एवरीवन इज वर्किंग ऑन द डिफरेंट डेटा बट एवरीवन इज वर्किंग विद द सेम प्रोग्राम. इसने कहा कि 1 GB का आउटपुट ये, इसने कहा 1 GB का आउटपुट ये, इसने कहा 1 का ये, इसने कहा 1 का ये, और फाइनली मैं क्या करूंगा, मुझे फाइनल आउटपुट मिल जाएगा बाय समिंग ऑफ दीज. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे चलते हैं. Just a minute, I am taking a break of just 1 minute. I want to have some water.
Okay, now am I audible? Yes, sir. Okay, okay. Now I'm resuming from the same point that this is the input file, and I have divided the data into default size of 64 MB. These are called as input splits, and the size of each input split is 64 MB. Now what will happen? So for example, I have a text file like Virat Kohli done well, Rohit is a captain, Rohit is a nice captain, kind of that. We have some tweets, we have some text file. And you have to write a program. You have to find the occurrence of the word Virat Kohli or Rohit Sharma. And these kinds of programs are very, very useful from the research point of view. For example, you have to perform some sentiment analysis, you have to perform some fake news detection, you have to perform some rumors detection. Then you have to analyze or investigate the text. You have some sort Sir, of your screen is not visible. okay, sorry. Now is it visible? Yes, sir. Okay, that's. We may have a number of problems. For example, we have a Amazon reviews, or we have a YouTube reviews, or we have some tweets having the size which is very, very large, which cannot be handled by our traditional programs. Then we have to write some MapReduce kind of programs for that. And now, for example, we have to perform some kind of text analysis on the data. For example, we have to perform some sentiment analysis kind of thing. Then we have to find the number of positive words. मुझे क्या करना होगा? Positive words, negative words, normal words, adjectives. We have to just go through the entire text, and we have to extract features from that. So I will discuss on those points in detail. At this moment, I am taking just one very, very basic example that we have to just count the occurrence of word Virat Kohli and Rohit. मेरे पास ही आया. Logic of the program is very, very simple. That I have this line. मेरे पास ये line है. I am going to break this line into the words, into the tokens on the basis of spaces. जहाँ space आया, मैंने word भी break कर लिया. और जहाँ कहीं पे मेरे पास word विराट आया, तो मैंने काउंट कर लिया काउंट प्लस प्लस, और जहां कहीं पे मेरे पास वर्ड रोहित है मैंने उसको काउंट कर लिया रोहित प्लस प्लस, व्हाटएवर इट इज. फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू रीड द एंटायर डेटा लाइन बाय लाइन. दिस इज द प्राइम रिक्वायरमेंट. क्या है? मुझे हर एक लाइन को रीड करना पड़ेगा, और रीड करने के बाद देन यू हैव टू ब्रेक दैट लाइन इनटू द स्लाइसेस, इनटू द वर्ड्स, एंड देन यू कैन फाइंड दैट whether that particular word is positive, negative, adjective, noun, Virat, Rohit, whatever it is, depending upon the nature of the problem statement. जैसी आपकी problem. Got it? But among all these problems that I have discussed, which are related to the text analysis, one thing is common, that you have to read the data line by line. मुझे क्या करना है? Data को line by line read करना है. And without reading the data line by line, we cannot perform the process. And this thing is common. ये तो common है. तो for that, इसके लिए भी क्या किया? Hadoop ने ये burden programmer पे नहीं डाला. I will do this job for you. मैं ये काम आपके लिए करके दूंगा, because I know that you have to read the data line by line. डेटा तो आपको रीड करना ही करना है, उसके बाद ही आप काम करोगे, उसके बाद ही आप प्रोसेस करोगे whatever you want to do. तो उसके लिए क्या किया? एक रिकॉर्ड रीडर इंट्रोड्यूस किया. रिकॉर्ड रीडर क्या है? फंक्शन, एक मेथड है. Now what record reader? Record means line. One record means one line. Now what record reader will do? Record reader will just
रीड द डेटा लाइन बाय लाइन। वो क्या करेगा, डेटा को लाइन बाय लाइन रीड करेगा। तो ये मेरे पास कोई टेक्स्ट फाइल थी जिसमें पास आई हैव ए नंबर ऑफ लाइंस 1 2 3 4 5, आई हैव मिलियंस ऑफ लाइंस इन वन इनपुट स्प्लिट, और हर एक इनपुट स्प्लिट पे इंडिपेंडेंटली रिकॉर्ड रीडर चलेगा। इनपुट स्प्लिट का साइज क्या है, 64 MB। इनपुट स्प्लिट्स क्या है, डेटा के ब्लॉक्स हैं जिनका साइज क्या है, 64 MB है। What will happen, this record reader is going to read the data line by line, and it is going to convert the data in the form of comma value, key comma value. Now I'm slightly and slowly getting into the details of MapReduce programming model. धीरे धीरे मैं MapReduce programming के अंदर जा रहा हूं। Now what will happen, this record reader is going to read the data line by line. इसने क्या किया, सपोज कर लो ये इनपुट स्प्लिट थी, ये डेटा ब्लॉक थी जिसके अंदर बहुत सारी लाइंस थी। ये क्या करेगा, की और वैल्यू फॉर्मेट में चेंज करेगा। वहां पे की क्या होगी, व्हाट विल बी द की, की विल बी कैरेक्टर ऑफसेट, की विल बी कैरेक्टर ऑफसेट। और वैल्यू क्या होगी, वैल्यू विल बी द एंटायर लाइन। पूरी एंटायर लाइन क्या होगी, वैल्यू होगी, और की क्या है, यू कैन एज्यूम दैट की एंड वैल्यू आर द टू वेरिएबल्स। के अंदर मैं क्या रखूंगा, आई विल कीप कैरेक्टर ऑफसेट इनसाइड द की एंड आई विल कीप लाइन इनसाइड द वैल्यू। वैल्यू के अंदर मैं क्या करूंगा, लाइन रखूंगा। नाउ हियर व्हाट इज द की एंड व्हाट इज द वैल्यू। कैरेक्टर ऑफसेट क्या होता है कि वो पर्टिकुलर लाइन नंबर किस कैरेक्टर नंबर से स्टार्ट हो रही है। तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन इज स्टार्टिंग विद कैरेक्टर नंबर 0। कैरेक्टर नंबर 0 से पहली लाइन स्टार्ट हो रही है। तो व्हाट विल बी की वैल्यू, तो रिकॉर्ड रीडर क्या करेगा, इसको पहले को कन्वर्ट करेगा 0, द 0 इज द की, क्योंकि पहली लाइन कैरेक्टर नंबर 0 से स्टार्ट हो रही है। दूसरी लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है, नाउ आई हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फॉर एग्जांपल दिस लाइन हैव 50 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इस लाइन में 50 कैरेक्टर्स, एवरी अल्फाबेट एंड एवरी स्पेस इज अ कैरेक्टर, गॉट इट। फॉर एग्जांपल दिस लाइन हैज 50 कैरेक्टर्स, तो जो मेरी सेकंड लाइन है वो कैरेक्टर नंबर 51 से स्टार्ट होगी। तो व्हाट विल बी द की वैल्यू फॉर द नेक्स्ट लाइन, इट विल बी 51 and the line is Rohit is a nice captain, like this, got it। We have to repeat this process again and this is the reason यहाँ पे एक loop है। Loop means record reader will keep on reading all the lines and it is going to convert those lines in the form of key comma value pair। यहाँ पे की क्या होगा, character offset, और value क्या होगी, value will be the entire line। Got it। अब आपके पास जो डेटा था, जो रॉ डेटा था, दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर, वेयर की इज द कैरेक्टर ऑफसेट। कैरेक्टर ऑफसेट क्या है, किस कैरेक्टर नंबर से वो लाइन स्टार्ट हो रही है, एंड वैल्यू इज द एंटायर लाइन। सिमिलरली ये रिकॉर्डेटर क्या करेगा, इस वाली इनपुट स्प्लिट के लिए की वैल्यू फॉर्म पेयर फॉर्म करेगा। ये क्या करेगा, इसके लिए ये वाला क्या करेगा, इसके लिए। ऑल द रिकॉर्डेटर्स आर गोइंग टू read the data from your text file and convert the data in the form of key comma value pair, where key is the character offset and value is the entire line। और value क्या है, पूरी पूरी line है, got it। ये की वैल्यू फॉर्मेट में डेटा आ गया। अब उसके बाद हर एक इनपुट स्प्लिट पे चलता है मैपर और रिड्यूसर। अब यहाँ पे आप देखो, लास्ट वाली स्लाइड में मैंने क्या बताया था, जो आपका प्रोग्राम होता है वो दो पार्ट में लिखा जाता है, वन इज द मैप एंड वन इज द रिड्यूस। वन इज द मैप एंड वन इज द रिड्यूस, दो पार्ट में लिखा जाता है।
सबसे पहले क्या होगा, आपका प्रोग्राम ऐसे चलता है, यहाँ पे आपका क्या है, मैप, आप दो फंक्शंस हैं, मैप प्रोड्यूस क्या है, दीज आर द टू फंक्शंस, मैप एंड रिड्यूस। सबसे पहले क्या होगा, आपका जो की कॉमा वैल्यू पेयर है, जैसे मैंने लिखा 0 विराट इज ए गुड प्लेयर, 51 कोहली इज ए नाइस कैप्टन। अब क्या होगा, ऑन ईच की कॉमा वैल्यू पेयर मैप फंक्शन विल रन, और मैप फंक्शन इज गोइंग टू प्रोड्यूस सम आउटपुट। ये क्या करेगा, सम आउटपुट जनरेट करेगा, और आउटपुट जनरेट करने के बाद reduce function will run on the output which has been generated by the map, और उसके बाद reduce क्या करेगा, फाइनल आउटपुट आपके लिए जनरेट करेगा। Someone has written some comment, I think. So, is it like reducing the data into a dictionary? Kind of, because dictionary also contains the data in the form of key comma value pair. So you can say that a record reader is going to convert the data in the form of dictionary, because dictionary is also contains the data in the form of key comma value pair. So you may assume like that. अब क्या होगा, record reader have generated the data in the form of key comma value pair. record reader ने क्या किया, डेटा को key comma value pair में जनरेट किया, और उसके बाद what will happen, am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yeah, okay. Screen is also visible, I think so, because connection was, I think, interrupted. Durgesh, is the screen is also visible to you? No, sir, it's not. Sir. It's not visible. Yes, sir, it's visible. Okay, I think now visible. Okay. I was talking about the mapper. That mapper is going to receive the data from the record reader in the form of key comma value pair, and now it is going to work according to the logic that has been written by the program. जो भी प्रोग्रामर लॉजिक लिखेगा उसके हिसाब से काम करेगा, ठीक है। Now for example, I am talking about the same program. अब मैं क्या करूंगा, for example, I have to count the occurrence of what Virat Kohli and roll it. Then what I will do, I will receive the value as a parameter. Value को हम parameter के तौर पर receive करेंगे, and what is the value? Value is the entire line. Value is a variable
जहाँ पे पूरी की पूरी लाइन रिसीव हुई है, और मैं क्या करूंगा, उस लाइन को टोकनाइज कर दूंगा. I can call any functions which are written in Java or which are written in Python. So I may write my produced program in Java or in Python, depending on your choice. So I can use the ready-made functions for that. मैंने क्या किया, split function use किया, and I have splitted my line using split function. तो मैंने क्या किया, वैल्यू डॉट स्प्लिट कर दिया और लाइन को वर्ड्स में ब्रेक कर लिया. Not just counting the numbers, I can count the numbers in the reducer. It will depend upon the programmer. This is the choice of the programmer. वो मैथ के अंदर क्या लिखता है और reducer के अंदर क्या लिखता है. So for example, inside the reducer, I have just written that if I will get the word Virat comma 1, Virat, I will write Virat comma 1, और जब भी मुझे रोहित मिलेगा, I will write रोहित comma 1. तो मैंने लाइन को ब्रेक किया वर्ड्स में. अगर वर्ड रोहित है तो रोहित कॉमा 1 लिख दिया, अगर जो विराट है तो विराट कॉमा 1 लिख दिया आउटपुट में. अदरवाइज आई एम इग्नोरिंग ऑल द अदर वर्ड्स. बाकी वर्ड्स मेरे काम के नहीं है, मैं उनको इग्नोर कर दूंगा. नाउ दिस मैपर इज अगेन प्रोड्यूसिंग द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ की कॉमा वैल्यू. मैपर भी क्या कर रहा है, आउटपुट जनरेट कर रहा है किस फॉर्म में, की कॉमा वैल्यू फॉर्म में. यहाँ पे की क्या है, व्हाट इज द की इज द विराट, and what is the value is the 1. In this case, what is the key is the Rohit, and what is the value is the 1. So now mapper is going to again convert the data in the form of key comma value pair, and what will be the key and what will be the value, it will depend upon the programmer, that what programmer has written inside the key and what programmer has written inside the value. प्रोग्रामर ने की के अंदर क्या लिखा और प्रोग्रामर ने वैल्यू के अंदर क्या लिखा, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन दैट. ये पूरी तरीके से उस पर डिपेंड करेगा. यहां पे इन माय केस, इन माय पर्टिकुलर इंटरेस्ट, मैंने क्या किया है कि मैथ के अंदर विराट कॉमा 1 लिख दिया और रिड्यूस के अंदर रोहित कॉमा 1 लिख दिया. इफ आई एम गेटिंग वर्ड विराट, आई विल राइट विराट कॉमा 1. इफ आई एम गेटिंग वर्ड रोहित, आई विल राइट रोहित कॉमा 1. इसने भी वही काम किया, इसने भी वही काम किया, इसने भी वही काम किया. All the mappers are performing the same kind of task. All the mappers are performing the same kind of task. The output which has been generated by the mapper is called as intermediate output. ये जो mapper output generate कर रहे हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, intermediate output. Got it? और ये इंटरमीडिएट आउटपुट क्या है, विराट कॉमा 1 रोहित कॉमा 1, विराट कॉमा 1 रोहित कॉमा 1, एंड दैट्स इट, बेस्ड ऑन द एग्जांपल दैट आई हैव टेकन. नाउ व्हाट विल हैपन, इसके बाद क्या होता है. My ultimate game is, my ultimate motive is to find the count of occurrence of word Virat. मुझे सारे विराट एक साथ चाहिए और सारे रोहित एक साथ चाहिए, so that I can count the occurrence of each word. इन दोनों वर्ड की मैं काउंटिंग कर सकता हूँ, और it may be positive word, negative word, adjectives, nouns, whatever, depending on the nature of the problem. अब आगे क्या होता है, लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड. अगली स्लाइड देखते हैं. ये मेरी क्या थी, दीज आर माय इनपुट स्पीड्स. ये मेरी इनपुट स्पीड्स थी. इनका साइज क्या था, बाय डिफॉल्ट इट वाज 64 MB. यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है, बट बाय डिफॉल्ट साइज इक्वल. हर एक इनपुट स्पीड पे क्या चला, मैपर चला. मैपर ने डेटा को किस फॉर्मेट में चेंज किया, की कॉमा वैल्यू. और जो मैंने एग्जांपल लिया था वहां पे की क्या था, विराट और रोहित, और वैल्यू क्या थी 1 in my example. But in general case, में की क्या है, मैंने कोई एज्यूम कर लिया की, और वैल्यू क्या है बी.
आई हैव डिफरेंट की कॉमा वैल्यू पेयर्स। इसने कुछ की वैल्यू पेयर जनरेट की, इसने ये जनरेट की, इसने ये जनरेट की, इसने ये जनरेट की, इसने जनरेट की। So every mapper has generated some key comma value pairs and this is called as intermediate output. और ये intermediate output mapper लिखेंगे कहाँ? HDFS. That is called as Hadoop distributed file system. कहाँ पे लिखेंगे? Hadoop distributed file system. अब मैंने क्या बताया था? My ultimate goal is that, my ultimate motive is that I need all Virat at one place like this, Virat comma 1 comma 1 comma 1, so that I can count all the occurrence of Virat, and Rohit 1 comma 1 comma 1 comma 1 comma 1 like this. Okay. ऐसे कैसे आएंगे? ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में थे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे विराट कॉमा 1, इसको भी 1 मिला विराट कॉमा 1, इसको भी 1 मिला विराट कॉमा 1, सबको विराट मिल रहा है, सबको रोहित मिल रहा है। इसको 5 बार मिला, इसको 6 बार मिला, इसको 10 बार मिला, इसको 15 बार विराट मिला। जिसको जितनी बार मिला सबने लिख दिया विराट कॉमा 1, और जितनी बार रोहित मिला उसने लिख दिया रोहित कॉमा 1। गॉट इट? Now what we will do? There is a default phase in the map reduce programming paradigm that is called as group by key. मैंने कहा कि पहले मैप चलता है और मैप के बाद रिड्यूस चलता है, और मैप रिड्यूस के बीच में एक डिफॉल्ट फेज होती है। प्रोग्रामर डोंट हैव टू राइट कोड फॉर दिस। इसके लिए प्रोग्रामर को कोई कोड नहीं लिखना। प्रोग्रामर को मैप के अंदर क्या करना है ये लिखना है, प्रोग्रामर को रिड्यूस के अंदर क्या लिखना है ये लिखना है, बट प्रोग्रामर डोंट हैव टू राइट द कोड फॉर दिस। दैट इज कॉल्ड ग्रुप बाय फेज इन बिटवीन। मैपर के बाद व्हेनेवर द मैपर विल जनरेट द आउटपुट, उसके बाद अपने आप एक फेज चलेगी दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप बाय की। ग्रुप बाय की का मतलब एक जो सिमिलर टाइप की है वो एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। यहां मेरे पास कितनी इंडिपेंडेंट कीज है? हाउ मेनी इंडिपेंडेंट कीज वी हैव? anyone can unmute and answer me that how many independent keys we have? Achha, someone is writing. Yeah, 2. Majority of you have written the answer 2. That is we have 2 key and value. One is Rohit and one is Virat. We have 2 key comma value. यानी कि यहाँ पे आपका क्या होगा? in our particular example, how many key and value pair will be after the group by class? कितनी होंगी? 2, because we have 2 independent keys. मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट कीज थी, तो अब फाइनली आपके पास ग्रुप बाय की के बाद 2 इंडिपेंडेंट की वैल्यू बची, एक विराट और एक रोहित। तो ये एक की है और ये की वैल्यू क्या होगा? 1 comma 1 comma 1, सारे क्या होंगे? ग्रुप बाय की। तो नाउ वी विल हैव द आउटपुट लाइक दिस। K1 मेरे पास K1 की थी, उसकी सारी वैल्यूज, K2 की सारी, K3, K4। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में 5 इंडिपेंडेंट कीज थी, तो की वैल्यू पेयर कितने बने? 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू। Now reducer will work after this phase that is called as group by key. सबसे पहले मैपर चला, की वैल्यू पेयर जनरेट किया, एसडीएमएस पे लिखा, ग्रुप बाय की हो गया। ग्रुप बाय की होने के बाद आउटपुट इस फॉर्म में आया, और आउटपुट इस फॉर्म में आने के बाद हमारा रिड्यूसर चलना शुरू हुआ। ये हमारा रिड्यूसर है। अब रिड्यूसर कितने होंगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ रिड्यूसर विल बी? ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर पे कि प्रोग्रामर कितने की वैल्यू पेयर जनरेट कराना चाहता है। अगर जो आपको लगता है कि एक की वैल्यू पेयर में बहुत ज्यादा डेटा होगा, तो आप हर की वैल्यू पेयर के लिए एक रिड्यूसर चला दो, नहीं तो आप एक सिंगल रिड्यूसर भी चला सकते हो
दैट विल वर्क ऑन इंटायर डेटा। जैसे मेरे पास यहाँ पे विराट और कोहली दो की वैल्यू पेयर थे, तो आप चाहो तो एक ही रेड्यूसर चलाओ। एक ही रेड्यूसर क्या करेगा, विराट वाले भी जितने की वैल्यू पेयर है, जितनी वैल्यूज है उनको काउंट कर लेगा, और रोहित वाली भी सारी वैल्यू को काउंट कर लेगा, सम कर लेगा इनका। हाँ, तो आप दो इंडिपेंडेंट रेड्यूसर चला दो, एक के पास विराट चला जाएगा और एक के पास रोहित चला जाएगा, और दोनों इंडिपेंडेंटली सम परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद वो आउटपुट फाइल जनरेट करेंगे। तो आउटपुट फाइल्स कितनी होंगी, जितने ये हमारी फाइल 1 है, ये फाइल 2 है, ये फाइल 3 है, ये फाइल 4 है, ये फाइल 5। अगर जो 5 रेड्यूसर चल रहे हैं, द नंबर ऑफ रेड्यूसर्स आर 5, तो 5 आउटपुट फाइल जनरेट होंगी। और अगर जो एक ही रेड्यूसर चल रहा है, तो देयर विल बी ओनली वन आउटपुट फाइल। तो नंबर ऑफ आउटपुट फाइल्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ रेड्यूसर्स, एंड द नंबर ऑफ रेड्यूसर्स आर द चॉइस ऑफ द प्रोग्रामर। रेड्यूसर कितने चलेंगे, प्रोग्रामर की चॉइस। आप चाहो एक चलाओ, आप चाहो दो चलाओ, आप चाहो तीन चलाओ, डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट व्हिच हैज बीन जनरेटेड बाय द मैपर। और जनरली जो रेड्यूसर का आउटपुट, रेड्यूसर का डेटा होगा ऑन विच रेड्यूसर विल वर्क, वो क्या होगा, कंपैरेटिवली कम होगा एज कंपेयर टू द मैपर, क्योंकि मैपर पूरे डेटा पे काम कर रहा था, इट वाज वर्किंग ऑन द एंटायर डेटा। बट और जो रेड्यूसर है वो आपको सिर्फ एक लिमिटेड डेटा पे काम कर रहा है, व्हिच हैज बीन ऑलरेडी प्रोसेस्ड बाय द मैपर। तो मेरे पास 10 GB का डेटा था, तो मुश्किल से अब एक 500 MB का डेटा बचेगा या 200 MB का डेटा बचेगा, ऑन विच रेड्यूसर हैज टू वर्क, क्योंकि मैंने सारे वर्ड तो बाकी इग्नोर कर दिए, सिर्फ क्या रखा, विराट और रोहित रखा, बाकी सारे वर्ड्स आई हैव इग्नोर्ड। तो फाइल प्रोसेस होके क्या बचे, आपका डेटा छोटा सा बचे। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मैपर कितने चलेंगे, कैन एनीवन जस्ट टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ मैपर्स विल बी देयर, कितने चलेंगे? someone is asking reducer and optimization। नहीं, reducer and optimization is not the different thing। मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, मेन जो पैरेलली मुझे टास्क कंप्यूट करना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है टास्क का, वो बेसिकली मैं मैपर से कराता हूं, और जब मुझे डेटा सेग्रीगेट करना होता है तो वो काम मैं रेड्यूसर से कराता हूं। जैसे मैं पॉपुलेशन काउंट वाले एग्जांपल से बताता हूं, मैपर क्या करेगा, आई हैव द 5 स्टेट्स एंड आई हैव द 5 पर्सन्स। तो मैंने क्या किया, हर स्टेट की जो पॉपुलेशन काउंट का काम है वो मैपर को दूंगा कि सबकी पॉपुलेशन काउंट करो, कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, वो मैंने मैपर को दे दिया। ठीक है, मैंने पूरे अपने एरिया को 5 इनपुट स्प्लिट में डिवाइड किया, यूपी, पंजाब, दिल्ली, बिहार एंड राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। आई हैव डिवाइडेड माय एरिया इनटू 5 ब्लॉक्स, और हर ब्लॉक पे एक वर्कर डिप्यूट किया, दैट वर्कर इज कॉल्ड मैपर। मैपर ने क्या किया, इंडिपेंडेंटली मेल्स और फीमेल्स को काउंट किया। वो काम बड़ा था, टू काउंट द पॉपुलेशन ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द एंटायर स्टेट, दैट वर्क वाज लार्जर एनफ, तो उसको मैंने मैप को दे दिया, और वो काम पैरेलली हो। अब जब सब सारी पॉपुलेशन काउंट हो गई, सबने अपने अपने स्टेट में बता दिया, मैं एक ने बताया मेरे स्टेट में 10 मेल है 5 फीमेल है, एक ने बताया मेरे में 20 है 10 है, एक ने बताया 30 है 5 है, वॉट एवर इट इज। अब फिर मुझे सबका एक ओवरऑल सम निकालना है, टू काउंट द सम ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स इन ऑल दोस 5 स्टेट्स। तो अब वो काम छोटा सा बचा, तो अब मुझे क्या करना है, उस डेटा को जस्ट सेग्रीगेट करना है। तो वो काम मैं क्या करूंगा, रेड्यूसर से करवा लूं। और रेड्यूसर कब चलेगा, जब सारे के सारे मैपर अपना आउटपुट जनरेट कर देंगे। इन बिटवीन मैप एंड रेड्यूस फेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड पैरेलली बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मैपर जो डेटा जनरेट कर रहा है, रेड्यूसर उसी पे काम कर रहा है, इसलिए मैप और रेड्यूस दोनों पैरेलली नहीं चल सकते हैं। पहले मैप चलेगा, मैप जब खत्म हो जाएगा उसके बाद रेड्यूस चलेगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है ना? आई थिंक ही हैज गॉट द पॉइंट। रेड्यूसर का काम क्या है, मेनली डेटा को सेग्रीगेट करना, और मैपर का काम है मेनली मेजॉरिटी ऑफ द डेटा पूल पे काम करना और टास्क को परफॉर्म करना। ठीक है, जनरली रेड्यूसर का काम मैपर से कंपैरेटिवली काफी कम होता है। ठीक है, अब एनीवन कैन टेल मी कि टोटल नंबर ऑफ मैपर्स कितने चलेंगे। रेड्यूसर तो मैंने बताया नंबर ऑफ, इट्स बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ द प्रोग्रामर। मेरे पास 2 की वैल्यू थे फाइनल, विराट और रोहित। मैं चाहूँ एक रेड्यूसर चलाऊं, एक ही रेड्यूसर विराट को काउंट करेगा, एक ही रोहित को काउंट करेगा, फाइनल सम करेगा। ठीक है, फाइनल सम का मतलब ये जो नंबर्स हैं, दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू।
तो ये जो नंबर्स हैं इनका जो सम करेगा, आपकी चॉइस है, चाहे एक रिड्यूसर से करवा लो या फिर आप उसको दो रिड्यूसर से करवा लो, ठीक है ना। चाहे आप एक रिड्यूसर से करवाओ और चाहे दो रिड्यूसर से करवाओ, लेकिन नंबर ऑफ मैपर्स और नॉट द चॉइस ऑफ द प्रोग्राम। मैपर कितने चलेंगे, एनीवन? Anyone can unmute and just tell me? I think someone has written in chat. Reduce mapper will be 1. No, actually mapper, what is mapper? Mapper क्या map function? 2 भी नहीं है. No. You can just look at the diagram. आप डायग्राम को देखो, यहाँ से आप एज्यूम कर सकते हो. यहाँ ये वाला डायग्राम को देखो, just look at this diagram. यहाँ पे आप देखो कितने मैपर चलने चाहिए. फिर किसी ने लिखा equal to the number of values. Using map reduce can find out negative positive results. Yeah, sure. You can find out the negative positive words as the number of nodes. Yeah, somewhat closer, but not equal to the number of nodes. It will be equal to the number of input splits. जितनी इनपुट स्प्लिट है, हर एक इनपुट स्प्लिट पे एक मैप फंक्शन चलेगा इंडिपेंडेंट. Got the point? It will जितनी सपोज कर लो, मैंने कहा कि 64 MB की मेरे पास 10 ब्लॉक थे, तो हर एक ब्लॉक पे एक सेपरेट मैपर चलेगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. गॉट इट? हर एक इनपुट स्प्लिट पे एक मैपर चलेगा. अब सपोज कर लो मेरे पास कोई एक ये था स्लेव नोड. मैंने कहा मेरे पास एक स्लेव नोड था, स्लेव नोड. इसके पास 1 2 3 4 5 इनपुट स्प्लिट थी. हर एक इनपुट स्प्लिट पे मैप क्या है? मैप फंक्शन है. अभी हम लोग डिटेल में जब मैं प्रोग्राम बताऊंगा उसमें दिखाऊंगा कि मैप फंक्शन के अंदर क्या होता है और कैसे मैं मैप फंक्शन को लिखता हूँ, और रिड्यूस फंक्शन कैसा दिखता है, मैं रिड्यूस फंक्शन के अंदर कैसे लिखता हूँ. आई विल टेल यू अबाउट दैट. गॉट इट? तो ये है मैप और रिड्यूस. व्हाट विल हैपन, सपोज कर लो एक मेरे पास एक कंप्यूटर था जिसके अंदर 5 इनपुट स्प्लिट थी. You know that मेरे पास सपोज कर लो कोर i7 कंप्यूटर है. कोर i7 कंप्यूटर के अंदर 8 लॉजिकल कोर्स होती हैं. 8 लॉजिकल कोर का मतलब 8 प्रोसेसर होते हैं. तो अगर जो आपके पास 8 इनपुट स्प्लिट हैं, तो हर एक लॉजिकल कोर पे एक पर्टिकुलर इनपुट स्प्लिट एग्जीक्यूट कर सकती है. दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल पैरेललिज्म. एक तो आपके पास 6 कंप्यूटर हो गए, और सपोज कर लो आपके पास कोर i7 कंप्यूटर है. कोर i7 है तो मतलब उनके पास 8 प्रोसेसर है छोटे छोटे. हर एक प्रोसेसर पे एक इनपुट स्प्लिट एग्जीक्यूट कर सकती है इंडिपेंडेंटली. तो आपकी पैरेललिज्म और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो इन नटशेल मोटा मोटा ये है, नंबर ऑफ मैपर्स कितने चलते हैं, जितनी नंबर ऑफ इनपुट स्प्लिट्स होती हैं. नंबर ऑफ मैपर्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इनपुट स्प्लिट्स. ठीक है. मीनवाइल आई थिंक अब हम लोग को ब्रेक लेना चाहिए. इट्स ऑलरेडी 4:30. सो मीनवाइल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट आस्क मी. जहां तक अभी हम लोगों ने किया